Good evening, actually, from India. India में तो शाम हो गई है. It's almost 8 o'clock. I guess it's 8 o'clock now. Yes, Yes, it is. it is 8 o'clock. We met about 10 minutes ago because we have to meet a little early. So I will say good morning, good afternoon, good evening, depending on where you are, all my friends. And I'm very happy to have Neelamji with us after quite a couple of weeks, 4 or 5 weeks, I would say. And we were having little time issues because it was to organize the appointment, and it takes a little time sometimes. Anyway, so Neelamji, a lot of she's been coming for more than a year now, I believe, and Yes. I'm just going to give a little introduction again because time to time I would like to um, talk about her because she's so talented, and she has all these events. I see the pictures all the time on Facebook, and I think she got awarded for so many things for 10 years. She just did something. आपका शुरू है ना आपका I think you started 10 years ago, right? If I'm not mistaken. Yes. Yeah. Yes, yes. This is our 10th anniversary year. We Yes. moved into 11th year this year. Yeah. I remember we discussed this last time, and I said हमारे 5 साल हुए हैं, आपके 10 years हुए हैं. Yeah. Bilkul, bilkul. Yes. Yes. And I love one thing I love about her that she loves animals and she has dogs, and we were just talking about her dogs, my daughter's dogs actually. She just has them right here with her nearby. So Neelamji is she's a Reiki grandmaster, and I think advanced Sujok therapist, right? An animal healer, which is something really amazing to heal the animals. I mean, I can understand healing the human being, but animals ko heal karna is a big, I think, seva, you can say. And animals can't even talk and tell you. I mean, by the behavior, you can make out they're in pain, True. they can't see anything. And switch words are really, really very important to know because, if you keep on repeating that, whatever you wish comes out, that comes true. So we should all do that actually. And she's been telling us every time she comes, she tells us switch words before she leaves. And switch words expert, and she's a naturopath and positivity coach. And she's a holistic, she has a holistic center. It's called the Nature's Grace in Jaipur and Gurgaon. Yeah, I remember last time when I was in, I would say 6.5 months ago, we met when I was in Delhi, and actually Gurgaon. I had gone there to the mall and we met over there. That was a very nice afternoon. Yes, that was wonderful. I'm Really, very happy to meet you. yes, and I was very happy too. And it was nice because it was a nice place. We had a nice little something to eat. I think we had something to drink. And she loves to bike, and she loves to bike, and she's a big time, like I said, dog lover, and she loves to feed and heal the pets and stray babies. मतलब dog के baby like you can say little pets. So even the stray babies, you heal them too? Yes. So Wow. we give complimentary healing to all the stray animals, and for the pets, it's a nominal Right. energy exchange for Reiki healing. And she also does courses on Reiki, which I did. I have to refresh it. I didn't get a time to do that. And Sujok and switchwords, treatments and of mental, physical, and emotional issues. So through Reiki, Sujok, and naturopathy, kids Reiki programs, wellness retreat and workshops. She also does all that, and energy healing sessions, animal and birds healing, counseling, and meditation programs. So you can reach her. I can give you the number if you want. If you're interested, please let me know, and I will share a number with you. So today our topic is very interesting, which you have suggested that one. Therapy is healthy. Now Yes. you can explain a little bit more about that to our friends who have joined Yeah. us. Let me see who they are. I haven't seen anybody yet because I've been on the phone looking at the आपका जो है bio वो मैं देख रही थी. So let me see who's there right now, and we can say hello to them. So आप बताइए, थोड़ा explain करें. Therapy is So health. first of all, Tavina ji, thank you so much for inviting me. It is always a pleasure to come to Dil Diya Galla. And more than the talk, it's actually a natural flow of conversation we always have, Yes. जहाँ पे दोनों तरफ से interaction होता है. And I feel every topic that we have discussed here has a very different way how we have approached that topic. Yes. Otherwise, I do in other places. Because this feels more like home, जहाँ पे आप बिल्कुल तसल्ली से आराम से अपने views share कर सकते हो viewers के साथ. So thank you so much for giving such a
cute, personal, homely platform to me. And yes, therapy is healthy. So see, what happens is therapy, जब हम word therapy use करते हैं तो अभी भी हमारे दिमाग में यही आता है, therapy is for people who have got mental issues, Yeah. right? टेक्निकली जिनको हम पागल बोलते हैं, दे आर मैड और दे आर मेंटली डिस्टर्ब, सिर्फ उनके लिए थेरेपी होती है, विच इज अ वेरी रॉन्ग कॉन्सेप्ट। हाँ, थेरेपी का मतलब ये नहीं होता कि जिनकी दिमागी हालत ठीक नहीं है या जो मेंटली बिल्कुल डिस्टर्ब है, अपने सेंसेस में नहीं है, सिर्फ उन्हीं को थेरेपी की जरूरत होती है। थेरेपी कैन बी रिक्वायर्ड फॉर एनीथिंग एंड एवरीथिंग। इट्स जस्ट लाइक फिजियोथेरेपी लेते हो आप, फिजियोथेरेपी आप एक नॉर्मल से एंकल स्प्रेन के लिए भी लेते हो और एक स्पाइन की सर्जरी के बाद भी लेते हो ना। yeah. दोनों ही केसेस में फिजियोथेरेपी वर्क करती है, राइट? द सेम वे थेरेपी ऑल्सो वर्क्स इन डिफरेंट डिफरेंट केसेस। थेरेपी वर्क्स इन योर रिलेशनशिप्स, थेरेपी वर्क्स इन योर हेल्थ, therapy also works in your financial mindset. Therapy helps in how you're looking at life, how you're approaching life. Therapy helps when you have a certain shock in life. अगर आपका कोई loved one गुजर गया है या कोई मेजर क्राइसिस आ गए या कोई सडनली मेजर फाइनेंशियल फॉल हो गया है, कोई एक्सीडेंट हो गया है, कुछ भी शॉक या ट्रॉमा हुआ है, तो उसमें भी थेरेपी हेल्प करती है। And therapy is for normal human beings. It is not for people who are only mentally disturbed. Therapy is required by everyone at any different stage of life, including me, including Veena ji. We also might need therapy. The reasons Yes. for therapy could be different. अगर आपके रिलेशनशिप में किसी एक पर्टिकुलर रिलेशनशिप में जरूरत है थेरेपी की, एंड इट इज नॉट ऑलवेज अ लव रिलेशनशिप, इट कुड बी अ प्रोफेशनल रिलेशनशिप, इट कुड बी अ रिलेशनशिप विथ योर किड्स, इट कुड बी अ रिलेशनशिप विथ योर सिबलिंग, तो उसमें भी थेरेपी हेल्प करती है। द होल पर्पस ऑफ थेरेपी इज टू गिव यू सर्टेन टूल्स and guide you to come out of that situation which is becoming a habit in your life, because of which you are getting stuck. Right. लाइक फॉर एग्जाम्पल, आपके अंदर मनी का फियर है, आपको पैसों को लेके हमेशा डर लगता है कि मेरे पैसे खत्म हो जाएंगे, मेरे पास पैसे नहीं रहेंगे, आई विल बिकम पुअर। ऑल्दो यू आर फाइनेंशियली abundant, you have good source of money, you have people who support you and everything, बट आपके अंदर से वो डर नहीं जा रहा। So to remove that fear, you need therapy. तो वो इसका मतलब ये नहीं है कि आप पागल हो इसलिए आपको थेरेपी चाहिए, नहीं। ये एक सर्टेन फियर है जो आपके दिमाग में हो सकता है बचपन की किसी कंडीशनिंग की वजह से हुआ हो सकता है आपके आपके पेरेंट्स के साथ कोई ऐसा इंसिडेंट हुआ हो, या आपने कोई एक फेज अपने बचपन में देखा हो जहाँ पे बिल्कुल पैसे नहीं थे एंड यू वर स्ट्रगलिंग फॉर मनी और योर फैमिली वर स्ट्रगलिंग फॉर मनी, बट द थिंग्स हैव चेंज्ड, बट दैट फियर हैज स्टिल स्टेड विथ यू। और वो फियर क्या कर रहा है, आज आपके पास जब पैसे हैं तो भी आप अपनी लाइफ को एंजॉय नहीं कर पा रहे हो। यू आर स्टिल लिविंग इन दैट फियर कि अगर मैं पैसे खर्चूंगी तो मेरे पैसे खत्म हो जाएंगे, और अगर मेरे पैसे खत्म हो गए तो मैं कैसे जीऊंगी। इट इज स्टॉपिंग यू टू लिव अ कंप्लीट लाइफ, अ हेल्दी लाइफ, अ हैप्पी लाइफ। So whichever part of your life is stopping you to live and enjoy that part, that is where your therapy is required. एंड थेरेपी इज हेल्थी, क्योंकि एक बार अगर आपने वो थेरेपी ले ली, एटलीस्ट विल बी लिव एबल टू लिव योर लाइफ टू द फुलेस्ट। हमने जन्म क्यों लिया है? सिर्फ काम करने के लिए तो नहीं लिया ना, सिर्फ करियर बनाने के लिए तो नहीं लिया ना, हमने जन्म लिया है ताकि हम हर एक दिन अपनी जिंदगी का अच्छे से जी सके। और अगर उस चीज को जीने में कहीं ना कहीं हम स्टक हो रहे हैं तो उसको हम रिजॉल्व कर सकते हैं। टेक इट एज अ पजल इन योर लाइफ दैट यू नीड टू रिजॉल्व। थेरेपी इज एज सिंपल एज दैट। That is true. That's why I say therapy is healthy, because it's going to enhance your living. It is going to make you more abundant in life. It is going to help you live a fulfilled life. और किसको अच्छी खुशहाल जिंदगी नहीं चाहिए बताइए? सबको चाहिए। अब Everybody. ये Right. देखना Yeah. है कि आपकी लाइफ में वो चीज कौन सी है जहां पे आप अटक गए हो। गाड़ी के सारे डब्बे चल रहे हैं, लेकिन अगर एक डब्बा पंचर है तो पूरी गाड़ी की स्पीड स्लो हो जाती है ना। अगर Correct. आपकी गाड़ी के चार टायर है, तीन चार टायर परफेक्ट है, चौथा टायर फ्लैट टायर है, तो आप कितनी देर तक गाड़ी चला पाओगे? तो उस Okay. चौथे टायर को फिक्स करने के लिए हम थेरेपी लेते हैं, विच इज वेरी हेल्दी। इट्स जस्ट लाइक टेकिंग एनी मेडिसिन दैट यू टेक फॉर एनी काइंड ऑफ फिजिकल प्रॉब्लम्स। यहाँ पे इमोशनल इश्यूज के लिए है।
जैसे फिजिकल इश्यूज के लिए आप मेडिसिन लेते हैं, फिजियोथेरेपी कराते हैं, एक्सरसाइज करते हैं, न्यूट्रिशन बैलेंसिंग की सप्लीमेंट्स लेते हैं, वैसे ही मेंटल और इमोशनल बैलेंसिंग के लिए हम थेरेपी लेते हैं. इट इज एज सिंपल एज दैट. That is true. But एंड why दैट्स द does रीजन आई से. but why there's some people who are hesitant, like for example जैसे हम बात कर रहे थे कि अभी इंडिया में है जैसे they're still not open about it too much. Some Because in concept, India, therapy is directly connected to your mental instability. that's the उनको लगता है जो थेरेपी ले रहे हैं वो दिमागी तौर पर पागल है. उनको थेरेपी और जो मेंटल ट्रीटमेंट है उसके बीच का डिफरेंस नहीं पता. थेरेपी सिर्फ तब नहीं ली जाती जब आप दिमागी तौर पे अनस्टेबल हैं. दिमागी तौर पे अनस्टेबल होते हैं तो आपका ट्रीटमेंट बिल्कुल अलग होता है. वो काउंसलर या थेरेपिस्ट नहीं करते, वो डॉक्टर्स करते हैं, वो न्यूरोलॉजिस्ट करते हैं, वो साइकोलॉजी के एक्सपर्ट्स करते हैं. दैट इज एंटायरली अ डिफरेंट फील्ड. जो yes. हम कर रहे हैं दैट इज अ थेरेपी, दैट इज अ नॉर्मल थिंग विच इज रिक्वायर्ड. जैसे आप काउंसलिंग लेते हैं वैसे ही आप थेरेपी लेते हैं. फर्क ये होता है कि काउंसलिंग और थेरेपी में देयर आर सर्टेन टूल्स दैट वी यूज टू हेल्प यू कम आउट ऑफ इट. कुछ चीजें होती है जो हम आपको करने को कहते हैं, कुछ चीजें होती है जो हम आपके साथ करते हैं. दैट्स व्हाई इट इज कॉल्ड थेरेपी. और सबसे बेस्ट एग्जांपल है फिजियोथेरेपी. अब आप किसी भी फिजियोथेरेपिस्ट के पास जाते हो, उसके पास अलग अलग मशीनें होती है, राइट? Yeah. उसके पास टेंस की मशीन होती है, उसके पास हॉट एंड कोल्ड पैक्स होते हैं, उसके पास इंफ्रारेड मशीन होती है. तो वो उन मशीनों से आपको थेरेपी देता है और उसके बाद आपको सर्टेन एक्सरसाइजेस बता देता है कि इसे आप बाद में कंटिन्यू रखिए ताकि ये प्रॉब्लम वापस ना आए. राइट वीना जी, दैट्स हाउ Big one. फिजियोथेरेपी वर्क्स. The Yes. same way therapy works. When you come to a therapist, first they will cure that problem that you have. Find out the root cause कि ये प्रॉब्लम किस वजह से हो रही है. फिर वो उसको क्योर करते हैं और उसके बाद वो आपको सर्टेन टूल्स दे देते हैं, सर्टेन प्रैक्टिसेस देते हैं करने के लिए ताकि आगे जाके ये प्रॉब्लम वापस आपकी लाइफ में ना आए. तो अगर कोई इतने अच्छी तरीके से आपकी लाइफ को सही कर रहा है तो उस थेरेपी को हम गलत क्यों बोल रहे हैं? सिर्फ इसलिए क्योंकि हमें थेरेपी का रियल मीनिंग नहीं पता, Correct. या सिर्फ इसलिए क्योंकि पुराने जमाने में थेरेपिस्ट या साइकोलॉजिस्ट या फिर काउंसलर के पास लोग इसलिए जाते थे जब उनको मेंटल प्रॉब्लम्स होते थे. चीजें बदल गई है ना. थेरेपी इज अ वेरी वाइड टर्म. इट इज नॉट जस्ट रेस्ट्रिक्टेड टू वन एलिमेंट. I agree. A lot of people can have different problems. Different चीज के लिए उनको Exactly. I like And some And with today's lifestyle, Veena people don't talk to their own family much, people, that's to what I'm their saying. friends much. So there is a lot of emotional and mental turmoil which keeps happening inside them. And to take that out, to address those issues, if you're not doing it with your friends and family, then you need a professional help. Mm-hmm. Well, और हमारे फ्रेंड्स और फैमिली भी कई बार पता है उस चीज को इग्नोर कर देते हैं. अब सपोज एक सिंपल सा एग्जांपल दूं कि अगर मैं अपने आप को ही ले लेती हूँ, अगर सपोज मेरा कोई ब्रेकअप हो गया, आई एम गोइंग थ्रू अ लो फेज इन लाइफ. अब छोड़ ना, दूसरा मिल जाएगा, ठीक हो जाएगा, क्यों सोचती रहती है उसके बारे में. ना दे आर नॉट अंडरस्टैंडिंग आई एम गोइंग थ्रू अ एंग्शियस फेज, आई एम हैविंग एंजाइटी right, अटैक्स, आई right. एम हैविंग palpitations, मुझे बार बार घबराहट होती है, मैं रात रात भर उस चीज के बारे में सोचती रहती हूँ. आई एम नॉट एबल टू टेक दैट फेज आउट ऑफ माई माइंड. और जब मैं अपने फ्रेंड्स या फैमिली को बोल रही हूँ दे सिंपली से इग्नोर कर, चल पिक्चर देख ले, चल घूमने चले जा, हॉलीडे पे चले जा. कई बार वो चीजें वर्क करती हैं, कई बार वो चीजें नहीं वर्क करती हैं. तो जब वो चीजें वर्क नहीं करती हैं तब हमें एक थेरेपिस्ट की जरूरत पड़ती है. I think you're right, बिल्कुल right. Because I think a lot of people don't understand किसका जैसे आपने बोला breakup. If you're with, let's say example, somebody is with somebody 2-3 years or even 1 year or 2 years, जो भी sometime in 10 years भी होता है, तब भी breakup. हाँ. And some people you hear they're together for 10 years. As soon as they get married, within a year they're breakup. Why? After getting there with it, they are with each other for such a long time. तो शादी के एकदम क्या what happens? So some things do happen. Because the expectations change the moment they get married. Now they treat each other as husband and wife, no more as partners.
जब right. आप एक पार्टनरशिप में होते हो तो आप इक्वल होते हो। जैसे ही आप मैरिज कर लेते हो वो हस्बैंड वाइफ वाला हो जाता है कि हस्बैंड ऊपर है वाइफ नीचे है, या वाइफ ज्यादा अर्न कर रही है तो हस्बैंड का ईगो हर्ट हो रहा है। एंड देन फैमिली एंड फ्रेंड्स एंड रिलेटिव्स, वो पूरा सिस्टम आ जाता है ना मैरिज में। जब आप रिलेशनशिप में हो तो सिर्फ दो ही जने होते हैं, तो इट्स इजी टू अंडरस्टैंड ईच अदर। बट जब 25 जने आपको आपके रिलेशनशिप पे ओपिनियन दे रहे हैं, आपके रिलेशनशिप को सुबह शाम Mhm. क्रिटिकली एनालाइज कर रहे हैं, तो ऑब्वियसली इट इज अ वेरी बिग प्रेशर एंड सम पीपल आर नॉट एबल टू टेक इट। Yeah, and I think like अब तो खैर कम ही हो गया इंडिया में अदर इवन पाकिस्तान इंडिया, आई डोंट नो अबाउट पाकिस्तान, बट इंडिया जॉइंट फैमिलीज का जो होता है सिस्टम. नाउ इट इज अ न्यूक्लियर फैमिली सिस्टम एवरीवेयर। Exactly. So those days there were a lot of women who were living together. They had no outlet. They were living like दे this for हैड अ आउटलेट, इट वाज जस्ट दैट इट वाज नॉट अ प्रोफेशनल आउटलेट। exactly फिर वो औरतें, चार औरतें बैठ के जो हम बोलते हैं ना एक दूसरे की बुराइयां करती थी, दैट वाज देयर आउटलेट टू टेक द स्टीम आउट। उसमें ये भी होता था, you never know who is gonna किससे लड़ाई होगी आपकी, let's say 2 3 एग्जैक्टली वाली then उसमें ये होता था कि कल को out. वो चीज किसी और हाँ, से ट्रिगर हो जाए, exactly. कोई और चुगली कर दे, तो वो होता था। बट व्हेन यू गो टू अ थेरेपिस्ट इट्स कंप्लीटली प्रोफेशनल एंड कॉन्फिडेंशियल। That's what I वो mean. थेरेपिस्ट आपके घर पे आके आपकी सास को, आपकी ननंद को कुछ बोलने नहीं वाला कि आपने ये बोला उसे। तो दैट इज द एडवांटेज ऑफ अ प्रोफेशनल इन योर लाइफ। That's what I mean. देखिए, Oh, it's वो different. रिस्क तो फ्रेंड्स के साथ भी रहता ही है। आप फ्रेंड्स को बता रहे हो, कभी आपका फ्रेंड कुछ बोल दे, किसी और को बता दे वो बात, जबकि हम हर बार बोलते हैं आई डोंट वांट दिस टू बी गोइंग एनीवेयर, इट हैज टू स्टे बिटवीन यू एंड मी, बट इट नेवर स्टेज बिटवीन यू एंड मी। वो सिर्फ हम Exactly. उनकी तसल्ली के लिए बोल रहे होते हैं। आप सोचते हो कि आपके फ्रेंड पक्के हैं, लाइफ लॉन्ग फ्रेंड्स हैं, that very few of them left, but they are at the end of your life. There are very few of them left. They're all gone, or they all. And किसको trust करो यार? It's very difficult to trust anybody for this personal thing. Yes. But then when it comes to a therapist, when it comes to a Right. That's counselor, exactly. they are Professional. professionally bound to keep your confidentiality. Secondly, they do not know your family and friends. They just know you, and their focus is to help you. Exactly. तो देखो, जब फ्रेंड्स और फैमिली होते हैं तो कई बार उनका मोटिव हर बार आपको हेल्प करना नहीं होता है। कई बार उनका मोटिव कुछ और भी होता है। कई बार उनका मोटिव होता है कि यू नीड टू शट ऑफ दिस टॉपिक, आई हैव टू समहाउ टेल हर समथिंग, ताकि इस बारे में बात करना बंद कर दे, बिकॉज दे आल्सो गेट बोर्ड ऑफ लिसनिंग टू Yeah, द of सेम थिंग। course. Definitely. कई बार उन्हें जल्दी से उस सिचुएशन से निकलना होता है। कई बार दे आर लाइक यार नॉट अगेन, यू नो दैट फर्स्ट फीलिंग दैट दे गेव इज, तो फिर से चालू हो गई, नॉट अगेन। So that means that is not the right forum to talk about your problems anymore. They are already giving you that indication. But when you go to a therapist, when you go to a counselor, you tell the same thing 10 times. They are not going to tell you not again. Because they understand the reason you are saying it 10 times. मतलब आपके दिमाग में ये 1000 बार चल रहा है, तभी तो आप इसको 10 बार बोल चुके हो एक घंटे में। अगर आप 10 बार बोल चुके हो तो सोचो, आप देखो इसके बारे में आप सोच कितना रहे हो। दैट मीन्स दिन रात सुबह शाम आप यही सोचे जा रहे हो। आपके दिमाग में और कोई टॉपिक ही नहीं है सोचने के लिए। So they understand the intensity of the problem that you are going through, which That- your friends and family will not understand. In fact, they'll get bored of it. They're not professional in that field, whatever field you're talking about or whatever you're talking about. So Exactly. as a out of because they're your friend, चलो 5 10 मिनट सुन लिया, 20 15 मिनट, उसके बाद में बोर हो जाते हैं वो, because they don't know what to tell you all the Or time. Same thing again and again. क्या because because professionally they are not apt for all those things ना। वो इमोशनल सपोर्ट दे रहे हैं आपको, मॉरल सपोर्ट दे रहे हैं, लेकिन उस प्रॉब्लम का रिजोल्यूशन वो नहीं दे सकते ना, क्योंकि उनके पास वो प्रोफेशनल टूल्स नहीं है। अब जैसे मैंने बोला, अगर आपको मसल क्रैम्प आया है, चलते चलते आपको मसल क्रैम्प आ गया, तो वो आपको कंधा देके आपके घर तक पहुंचा सकते हैं, लेकिन उस क्रैम्प को कैसे ठीक करना है वो तो उन्हें नहीं आता ना। ज्यादा से ज्यादा वो आपको एक आइस पैक दे देंगे, एक वॉलनी दे देंगे लगाने के लिए, जितनी उनकी स्पेसिफिक नॉलेज है उस सिचुएशन को लेके वो दे देंगे। पर उसके आगे वो क्या कर सकते हैं? that is उसके आगे तो आपको फिर एक थेरेपिस्ट के पास ही जाना पड़ेगा ना उस चीज को रिजॉल्व करने के लिए। बिल्कुल. और इसलिए कहा जाता है थेरेपी इज हेल्दी, क्योंकि अप्रोचिंग a therapist is as good as approaching a chemist or a doctor for your problems. It's the same thing, except this is a
नॉट अ फिजिकल थिंग, ये नहीं आपको जो बाएं में चोट लगी इट है, इज इमोशनल इशू, इट इज अ मेंटल इशू। इमोशनल तो ऑल इन योर आप माइंड। शायद उसको देख नहीं सकते, पर आप उसे फील तो कर रहे हो ना। आपकी डेली लाइफ पे वो इम्पैक्ट करता है, आपके एनर्जी लेवल्स लो कर देता है। और कोई भी एक पार्ट जब आपकी लाइफ का वीना जी इफेक्ट होता है, पर खराब होता है ना, वो आपकी पूरे सिस्टम को इफेक्ट करता है। एग्री एग्री। If you're having a personal issue, it will affect your professional life also. If आई you're having a पर्सनली, professional issue, it will या, affect your oh yeah, personal life also. I personally think that everybody has some kind of a, I think everybody needs a therapist. Yes, everybody needs a therapist. Everybody needs it. किसी चीज के लिए एक सबको Like, कुछ ना कुछ प्रॉब्लम है। नाउ हाँ, इफ यू और डोंट ये डू नहीं कि इट, आपको लाइफ लॉन्ग उनके पास जाना है। जैसे प्रॉब्लम रिजॉल्व हो जाएगी, यू बी ऑन सेशंस, योर ओन। वो आके आपकी लाइफ में इंटरफेयर नहीं करने वाले। might be some sessions you need to clarify some things which you cannot discuss with Yes, anybody else. तो clarify भी yes. कर सकते हो, and then after that you get a clearer mind कि मैंने मैं ये बात, I should follow this thing or I should do this जो आपने बताया है, I should follow it. क्लैरिफाई कर सकते हो, गाइडेंस ले सकते हो हर बार। ये एक बार कोई चीज सिखा दी उन्होंने, लाइक मेडिटेशन। ओके, so meditation also helps you in de-stressing, but you need to know what kind of meditation you need to do in your situation, right? Yeah. हर बार ओम चैंटिंग से आपको रिलीफ नहीं मिलता ना। देयर आर सर्टेन डिफरेंट टाइप्स ऑफ मेडिटेशन व्हिच हेल्प यू। तो वो आपको अगर पता चल जाए कि आपके थेरेपिस्ट ने वो आइडेंटिफाई करके आपको बता दिया, आप ऐसे करोगे तो आपको रिलीफ मिलेगा, उसके बाद यू डू इट ऑन योर ओन। So there's one more thing, where there's one more advantage of going to a therapist than going to your friend or your family. फ्रेंड्स और फैमिली के ऊपर आप इमोशनली डिपेंडेंट हो जाते हो, तो दे फील द प्रेशर। एक थेरेपिस्ट के साथ आपकी इमोशनल डिपेंडेंसी नहीं होती, बिकॉज द थेरेपिस्ट इज प्रोफेशनल। जब आपका सेशन खत्म हो गया, ही विल आस्क यू टू लिव योर नॉर्मल लाइफ using these tools. He will not tell you to come back to him again and again, because his whole purpose is to make you self-sufficient. Yeah. वो नहीं चाहता आप जिंदगी भर उसके ऊपर डिपेंडेंट रहो, राइट? Yeah. लेकिन फ्रेंड्स और फैमिली के साथ क्या होता है, आपकी डिपेंडेंसी बहुत जल्दी क्रिएट हो जाती Hmm. है। और And कभी कभी वो सामने वाली डिपेंडेंसी इतनी हेल्दी नहीं होती। कभी कभी अगर आपको उनके साथ इनिशियली एक अच्छा रिस्पॉन्स मिला, बाद में जाके नहीं मिला, तो वो अपने आप में एक और इमोशनल ट्रॉमा बन जाता है आपका। that you're right, because they're depending, चलो फैमिली है, जब मर्जी बात कर लो, जब मर्जी कोई but the other person वो they don't know what to say after a certain point, they don't know what advice to give you. Yeah, because they don't know what best they can do for you other than referring you to a specialist. कि भाई तुम इससे जाके मिल लो, this person might help you. So, this is a different type of a question now. What kind of a Mhm. therapists ki do they have to go like a learn? Is it a psychiatrist or is it a therapist? What is it there does it to become that? How many years do they need to So learn? there are different courses. Okay. Psychiatrist is different, okay? Psychologist is different. Therapist and counselor is in the same category. तो ये तीन different categories है। जो हाँ, psychiatrist है, neurologic आपकी आवाज बंद हो गई है। उनको focus कर। Okay. So no, can you repeat Can that? you hear me now? Yeah, no, no. Now we can hear you. Can you say Okay, repeat that again? But the okay. psychiatrist. So the psychiatrist is the one who will take care of your neurological diseases. Oh, आपके ब्रेन के डिजीजेस को, जैसे ओसीडी हो गया, okay. कोई और मेंटल बिहेवियर हो गया, शाइजोफोबिक हो गया, तो वो साइकियाट्रिस्ट डील करता है। दैट इज अ प्रॉपर एलोपैथी टर्म, इट इज अ पार्ट ऑफ योर एलोपैथी। ओके, Okay. जहाँ पे साइकियाट्रिस्ट होगा, मेंटल वार्ड होगा, वो आपको मेंटल वार्ड में रखेंगे, तो वो कंप्लीटली डिफरेंट चीज है। Now, psychologist. Psychologist is again a person who is a combination of both. तो उसके पास टूल्स होते हैं सर्टेन बिहेवियरल इश्यूज को सॉर्ट आउट करने के लिए। जैसे आपके पास ओसीडी हो गया, किसी को ऑब्सेसिव कंपल्सिव डिसऑर्डर है, किसी को वो बीमारी हो जाती ना कि मुझे सब कुछ ऑर्गेनाइज चाहिए, मुझे सब कुछ ठीक चाहिए, Yeah, तो वो yeah. सर्टेन कॉग्निटिव बिहेवियर हो गया, तो उसमें साइकोलॉजिस्ट आपको हेल्प करता है। Now comes the therapist or a counselor. Therapist or a counselor helps you in certain emotional behaviors and patterns in your life. तो सपोज एक आपका ये इमोशनल बिहेवियर है कि whenever you land up into a relationship,
you give your 100% very fast. You get too committed. Okay, you get too obsessed with that person. You want that person to be around you for 24 hours. You want that person to keep assuring you. Now, this is an emotional problem. This comes maybe out of some childhood trauma. तब आपको थेरेपिस्ट या काउंसलर की जरूरत पड़ती है because they will figure out from where this problem is coming because this problem is deep rooted in your childhood, in your upbringing. It could be a part of any incident that has happened with you. उसके बाद ये impact आपके दिमाग पे पड़ गया. So this is not a neurological disease कि जिसके लिए आपको psychiatrist की जरूरत पड़ेगी. कई बार ये इंसिडेंट बेस्ड भी होता है जैसे अगर आपका कोई बहुत ही लव्ड वन अचानक से गुजर गया ओके देयर कुड बी एन एक्सीडेंटल डेथ सपोज योर पेरेंट योर सिबलिंग somebody and you were very attached to that person now you're not able to come out of depression you have lost interest in your own life after that person has passed away you don't feel like doing anything you don't know how to cope up this grief you're not able to process that grief that's where the therapist helps you that's where a counselor helps you तो थेरेपिस्ट वो चीजें करता है Yeah, that's true. Because तो if you दैट इज द डिफरेंस और थेरेपी इसलिए हमें चाहिए होती है क्योंकि हमारे सबके लाइफ में कुछ ना कुछ होता रहता है राइट कभी yes, ब्रेकअप भी होगा कभी लव्ड वन भी चले जाएंगे कभी कोई फाइनेंशियल क्राइसिस भी हो जाएगा कभी कोई सडन बिजनेस लॉस भी हो जाएगा ये चीजें होती रहती है राइट और ये चीजें सिचुएशनल होती है तो इनका इम्पैक्ट इमिजिएटली होता है लेकिन इनसे आप जल्दी से निकल के भी आ सकते हो अगर आप सही गाइडेंस लेते हो like you grieve, like for example, जैसे आपने बोला कि somebody passed away very close to you and you're grieving. So Yeah, you're not grieving at all. You are just putting yourself out in the work. You do not give time to process that thing to yourself because you're running away from reality. right. बहुत से लोग होते हैं जो रोते भी नहीं है. They try to show that strength and I'm strong and all that. They don't give time them for themselves to heal out of that situation. वो दूसरे ही दिन से काम करना चालू कर देंगे, And उस I चीज के think बारे में बात नहीं करेंगे. एंड yeah, इवेंचुअली क्या होता है थोड़े दिनों बाद वो चिढ़ में निकलने लग जाता है. यू स्टार्ट थ्रोइंग tantrums, you start losing your temper, you are always irritated. But the root cause is not the work pressure. The root cause is you are not processing that grief. You are not coming terms to that fact that this person is no more. I find a lot of the जो जैसे हमारे देसी बंदे होते हैं आदमी होते हैं ना they are the ones who don't they think they're macho everything they can do anything but That's they why I say, na, but they don't men in know. India are more traumatized than women in That's India. what I'm saying. They don't want to deal with anything. They don't want to. They think that they're the God's gift to this world. That's what they think, but they're not. That's how, Veena ji, that's how they've been grown. From Exactly. years all together. बचपन में लड़के रोते हैं तो हम उनको क्या बोलते हैं लड़की है क्या जो तू रो रहा है See that statement itself says that you are not supposed to cry if you are a boy. तो जो So जिस बच्चे को आपने बचपन से सिखा दिया कि तुम रो ही नहीं सकते तो विच इज द अदर वे ऑफ प्रोसेसिंग ग्रीफ आपने उसको किसी और तरीके से तो अपने दुख को एक्सप्रेस करना सिखाया ही नहीं आपने जो एक नॉर्मल तरीका था जो हम सब जानते हैं कि कोई चोट लग जाए दुखी हो जाओ तो आप रोते हो दैट्स अ नॉर्मल रिएक्शन यू नो यू गेट टीयर्स इन योर आईज एंड एक्चुअली यू आर रिलीजिंग दैट पेन थ्रू योर टीयर्स आपने वो नॉर्मल प्रोसेस तो बंद कर दिया ये कह के कि लड़के रोते नहीं है उसकी जगह उनको कोई और प्रोसेस सिखाया भी नहीं कि भाई अगर आपको कोई चोट लग जाए अगर आपको किसी चीज का दुख हो तो आप किस तरीके से उसको एक्सप्रेस करो अगर आप रो नहीं सकते तो कोई दूसरा तरीका है उसे एक्सप्रेस करने का आपने वो भी नहीं सिखाया तो फिर वो कहाँ से आएगा I mean, male, mostly male. I mean, not. I'm not saying only I'm Asian. only talking about males Yeah, right I'm now. not saying Yes, male. only Asian India का यहाँ उधर का यहाँ के भी मेल ऐसे होते हैं a lot of them but there are also a lot of them over here in this Western countries they're very emotional they talk very openly मतलब बात करते हैं See, they show the emotion more than the Eastern. because in West, therapy is considered as healthy. They have these AA associations. If you are alcoholic, Yeah, there is a get together. They talk about the experiences. They admit that I am an alcoholic and I have been clear from so many months. If you are into drugs, they have associations to help you come out of it. And they proudly say that I'm a member of this.
They do it. They But do. in India, it doesn't happen that way. वहां पे अगर आप थेरेपी लेते हो तो उसके बाद you say, yes, I have taken therapy and I'm out of this situation now. I have taken professional help. वहां पे जो वेटरन्स होते हैं, जो वॉर सोल्जर्स होते हैं, जो वापस आ जाते हैं वॉर करके, उन सबको भी थेरेपी दी जाती है Oh ना. yeah, definitely. They It is need. important, right? Because though otherwise those images, those experiences, those trauma are going to haunt them for the rest of the life, and they will not be able to live a normal, healthy life. You're right. तो आपको पता है डॉक्टर्स भी थेरेपी लेते हैं. Mm. Every now and then even a doctor takes therapy because कई बार बहुत सारे ऐसे complicated cases होते हैं where they lose the patient, where they have tried their hard. They are seeing life and death every day in and day out, especially surgeons. उनको भी वो mentally और emotionally impact करता है, तो they also take therapy to live a normal life when they go back home. Oh, that's the thing. So it is healthy. People like you and me also need therapy. कारण अलग अलग हो सकते हैं. I think I needed when I came back from India after I was traumatized over there, which I didn't take, but I should have to get over Yeah. that. Whatever you know what happened to. I told you when I went to the border. No. No, I didn't tell Actually, you. the border. Oh, no, I don't know about it. To go from Pakistan to India to Amritsar from Lahore to cross the border, and I had a problem with my visa. I could not, although I just had to do one step. I'm Lahore, and the next step is Amritsar. You know, at the Wagah border. Hmm. My visa was the one that I got because I'm an American citizen, so I could not. उसमें लिखा था the only way you can go to India from Pakistan is by air. You can't cross. There's no Okay. boat, nothing. Okay. It's the only way. Hmm. So Hmm. when I was ready to go, and I was, everything was ready to go, and then I had to go to take the taxi, go to the airport in Lahore. And there's no direct flight to India from Pakistan, so I had to go to Dubai, and then I had to go from Dubai. I had to go to New Delhi. So that's how I came to India. Oh, wow. I lost And you were not aware of this at all. No, because my visa was there. I said, okay, I'm going to cross. I'm going to cross and go to Amritsar. I wanted to go to the Golden Temple. My friend was with me. We were together. We were going to stay in the hotel together, stay there for a couple of days. And then we already had the car booked from Amritsar to go to Delhi, to the hotel. हमारा hotel booked था. Hmm. But that did not happen. So she had to go by herself, and I had to go through this way. So 48 hours तो मेरा से निकल गए without any sleep, nothing. So I was And imagine unexpected expenses, unexpected pressure via flight, traveling. Yes, it is something very traumatizing. I can understand because you are going in a different mood and suddenly everything has changed for you. really, I think that time I was, but that's the time when I met you and Gotham and Rimple and a few other people in Delhi. I was there for 4 or 5 days, but then so I met everybody. That's how I met you guys. I'm sure I must have told you, but maybe not so much. But No, actually, we did not get that much time to talk about these things. Now we were only busy with that's true. ourselves. So I think Hmm. I didn't tell Gotham and all because they So think now, see, take this one simple example. Now, also, when you talk about it, you will feel the kind of pressure you felt at that time. क्योंकि जब कोई बुरी मेमोरी होती है हम जब उसको much better दोबारा now. बोलते हैं तो I'm much better now because I'm trying to do the therapy to myself, meaning um, I talk myself meditation करी थोड़ी talk out किया अपने आप को. एग्जैक्टली सो To यू be very नीड टू honest, यू नीड टू कम आउट ऑफ दैट जबकि to वो be very honest, इतनी बड़ी बात नहीं थी लेकिन द सडन चेंज इन प्लान्स समथिंग सडनली चेंजेस ऑलवेज इम्पैक्ट्स अस मेंटली एंड इमोशनली because most of the people that I talk to, I would say 100% of the people did not understand what I went through, and they don't want to know. आई कैन अंडरस्टैंड क्या हुआ? आई कैन अंडरस्टैंड टिकट के पैसे तो मिल गए, फिर क्या हुआ? मैं क्या टिकट के पैसे की बात नहीं होती. इट इज नॉट अबाउट टिकट के पैसे इट इज Money. आप एक माइंडसेट से वहां जा रहे हैं और इट इज लाइक कि आपका डेस्टिनेशन सामने है यू जस्ट नीड टू वॉक 100 फुट एंड somebody asks you to walk 2 kilometers and come to that same place which is traumatizing which is In disturbing. my case, I had to fly from Lahore to Dubai. Dubai and Dubai to I India, I mean, could not cross. and it is a big thing. I mean,
ट्रैवलिंग इज नॉट इजी। आप पैक करोगे, उतरोगे, चढ़ोगे, जाओगे, यू हैव जेट लैग, यू हैव फ्लाइंग इश्यूज, घर आना जाना। और ये अगर आपको डायरेक्टली जाना होता तो आप 3 घंटे में पहुंच जाते। So people, 90, I would say 99.9% or even 100% people did not understand. कोई See, बात that is नहीं, another तुम problem. People do the don't same, understand. and they are telling me नहीं नहीं कोई बात नहीं, you're okay now, भूल जाओ ये वो. मगर it's not easy to एग्जैक्टली, तो वही होता है ना। देखिए, जब भी हम अपनी along the किसी way. When Nilamji, प्रॉब्लम को, along the way, I met all kind of weird people. Taxi driver, this. I met all kind of. I had to talk myself how to talk to them. I had to use my acting skills. You can say, hi, हम तो यहाँ पे टैक्सी चलाते हैं, आपको यहाँ ले जाते हैं, आपने यहाँ जाना है, थोड़ा घुमा देते हैं एयरपोर्ट जाने से पहले. नो मैं नो नो नो, I have to go. You know what? I'm a grandmother. I have to think about my kids. मैं उनको कॉल करने लगी हूँ. So I had to do a lot of other things besides traveling from there to there, which nobody will understood. understand. Nobody understood Nobody will understand. what I had to go through. So that's what I'm saying. But I eventually, what I did was to myself, I gave therapy to myself, and now I'm at peace. I would say 75% I'm kind of over it, but now this thing triggered it, this topic, because this thing came back in my mind. But basically, I forgot about it in the sense I meet the people who did this thing to me, and I'm okay with them. I say hello to them, talk to them. Socially, the one I got the visa from, that I see the people once in a while. So otherwise, I would be. The beginning I was where I didn't want to talk to them, I didn't want to see them. Now it's come to the point I can do that. I am able to move on. But the thing is, this is still is there. Just that if anything triggers it, it's going to come up. Anything triggering it. So this is one point even I want to you share this experience. As you said, people don't even understand what you have gone through, and they don't want to understand either. What they are looking at is only the monetary part. हर बार यही होता है लोगों के लिए। मॉनेटरी सेटबैक इज अ वेरी बिग थिंग। अगर आपको अपने तरफ से एक्स्ट्रा टिकट के पैसे देने पड़ते, एक्स्ट्रा वीजा के पैसे देने पड़ते, एक्स्ट्रा फाइनेंसेस होते, तो तब सबके लिए बहुत बड़ी चीज होती है। अरे तुझे एक्स्ट्रा $500 खर्च करने पड़े, तुझे एक्स्ट्रा टिकट लेनी पड़ी, तेरा बजट ऊपर नीचे हो गया होगा। So when it comes to money, everybody is very concerned. But when it comes to emotional discomfort, physical discomfort, people, for them it is nothing. So they are Exactly. so insensitive and they don't understand that discomfort is also equally harming our Very mental funny. health. I don't know how I went through that time all alone. All alone, Exactly. and going with And I was a sleazy taxi driver के साथ मैं एयरपोर्ट जा रही हूँ 3 घंटे बैठ के. I mean, बिल्कुल, I had to really talk it out with that person. So exactly. I could say all my skills and everything were out in the open, which I think I did a pretty good job. Or where I gave him extra money, whatever it is to take me to the airport. मैं कहा वहाँ पहुँचूंगी, I'll be okay. Then over there I Hmm. managed. I went to the, and people were very nice to me. There were some people, I told them what happened, and they were very sympathetic. The airline people, they were just sit with us. We'll give you this thing. And I went to the lounge and I had my coffee, tea. They were bringing everything to me. So I calmed down a little bit. But the anger was there within me, which I've never been through this thing in my life alone. I never, but then I realized that I'm quite strong. I can do this. Veena, you went through this thing. You did it without anybody's help. You did everything on your own. So I was proud of myself that I could. Yeah, that is good thing that you were proud of yourself, but at the same time, this was a trauma Traumatizing. also which you accepted. See what happens now when people come into these difficult situations, they always put the brave front. Yes, I did it. But they do not admit that this was painful. Yes, this I am admitting it very openly. Yes. So the moment you admit this is painful, that is where your real emotions are coming. अरे मैंने कर लिया, I was good, I managed it, and this, that, and all. 80% of the people will only talk about this because they want appreciation. Right. They will not even acknowledge their own pain. They will not even acknowledge their own discomfort. Try to अब talk to जिस so चीज many को people. आप ही हाँ. acknowledgement नहीं करोगे, तो कोई और कैसे आपकी हेल्प करेगा या सपोर्ट करेगा? I tried to talk to a lot of people. I said, my God, you don't know what. कोई बात नहीं, it's okay, get over it, it's okay. So forgive and forget. That's the kind of People talk don't I got. understand, huh? People Yeah, don't understand. They and get you, really insensitive. I know what I went through and I know how to deal myself. So I really basically did my own therapy, you can say, to myself. So I Good. don't, I'm so proud of you. You yeah, did I that. did that to myself, and I'm so proud of you. You acknowledge that yes, it was traumatizing yeah, because it was. it was.
And like I said, along the way, I met a lot of people alone in the taxi from the Baga border to the airport, meeting, and then on the way talking So to different people. imagine, Hey, Meena ji, if such a small incident can impact you so much. In our life, we come through so many oh yeah, incidents and we do not process that incident. We do not acknowledge the pain we have gone through. We do not acknowledge the trauma we have gone through. तो क्या होता है? Slowly, slowly, आपके emotions में numbness आने लग जाती है. You बिल्कुल. become non-reactive. फिर कोई और भी अपना कोई पेनफुल इंसिडेंट बता रहा होगा, आपको उससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा. हाँ ठीक है, आई हैव सीन मोर पेन देन दिस. You have seen more pain than this doesn't mean that you don't have a sympathetic ear towards the other person. So I do. Right. you really need therapy because you are losing your empathy. You are losing your sensitivity. And why is that happening? Because आपने खुद ने ही अपना पेन और अपनी ट्रॉमा को कभी प्रोसेस ही नहीं किया, कभी एक्नॉलेज ही नहीं किया, कभी कोई हेल्प ही नहीं ली उसको समझने के लिए और उसमें से निकलने के लिए. यू जस्ट केप्ट सप्रेसिंग इट, सप्रेसिंग इट, सप्रेसिंग. एक के ऊपर एक के ऊपर एक के ऊपर एक आप डालते गए. In the end, what happens? From being an emotional and sensitive person, you become a cold and distant person. Exactly. You're And right. that cold and distant person is going to affect everybody who's in a relationship with that person. Could be their wives, could be their kids, could be their siblings, could be their colleagues. हर एक को वो बंदा इम्पैक्ट करेगा क्योंकि उस एक बंदे की वजह से उन सबकी मेंटल हेल्थ भी खराब हो जाएगी. You're right. But I So the luckily impact is not only um, person, but everybody fixed else. to you. It is affecting everybody around you. Mhm. So you not processing something is not something which is going to withhold things for you. It is going to impact everyone who's a part of your life. और उनकी क्या गलती है? कोई गलती नहीं है. उनको तो पता भी नहीं है आपके साथ ये सब हुआ है. आज आपने मुझे बताया, अगर आप मुझे नहीं बताते तो मुझे तो पता नहीं चलता ना. Exactly. राइट? I know and I, like I said, I'm with everybody else. I behave the same way. Anybody's problem, I listen to them. I'm not become that जो आपने describe किया उस type के मैं नहीं बिल्कुल नहीं हूँ. I listen to my kids. I listen to I mean, everything back to normal. In the sense, this experience that happened, now I realize that I should have maybe I should have taken some couple of therapy lessons, therapy sessions rather, which I didn't. But That is the only problem why people avoid therapy. Because then they need to acknowledge their fears. Then they need to acknowledge the fact that this was something which affected us emotionally. And people, 80% of the people don't want to acknowledge their fears. They don't want to acknowledge their problems. जब आप किसी चीज को एक्नॉलेज ही नहीं करोगे तो उसका रेजोल्यूशन कहाँ से मिलेगा? भाई जब आप मानोगे ही नहीं कि प्रॉब्लम है तो उसका सोल्यूशन लाएंगे कहाँ से हम? जब that's तक आप नहीं बोलोगे कि ये प्रॉब्लम है तब तक तो उसका सोल्यूशन कोई भी आपको नहीं दे सकता ना. और आप खुद अप्रोच नहीं कर रहे हेल्प को. आपको हेल्प अगर मिलती है तो भी आप उसको एक्सेप्ट नहीं करते. There's so many people who will be willing to help also. You will not accept it out of your ego. नहीं मैं कर लूंगा. You can't do anything on your own. You need support in every stage of your life. That's why we are a society. Otherwise हम अकेले अकेले रह रहे होते ना जंगलों में. I know. घर क्यों बने, कॉन्स्टिट्यूशंस क्यों बने, कम्युनिटीज क्यों बनी, ग्रुप्स क्यों बने? I mean, I got the like I used to talk to him, my husband. So he used to tell me, we used to talk all the time about this thing. So like I said, it's not that I'm 100. What I'm trying to say is that it's not that I'm 100% over it. It's still there, the feeling, only when it triggers. Otherwise, I kind of put it under the rug. You can say, यार थोड़ा भूल गई हूँ उसके बारे में. So it's okay. What happened? But because I don't discuss this with anybody, because I feel that they don't like I did in the beginning when I really needed everybody's थोड़ी sympathy, थोड़ी बात सुनने के लिए. I didn't get that at all. Nobody You understood. didn't get that here. That's why you avoided. You stopped talking I about stopped it. talking about it. That's what But, happens. yeah, क्योंकि जब आपके फ्रेंड्स और फैमिली उस चीज को सपोर्ट नहीं करते हैं तो आप उसको साइड में रख लेते हो कि ठीक है छोड़ो. पर वो छोड़ना नहीं होता क्योंकि वो ट्रिगर तो आपका no, तभी भी it is रहता so. ही है. I talked to my husband in the house, one or two, my kids a little bit. Even the kids were So a I'll bit. give you one very simple tip to come out of it. Okay. Just take a journal or diary or whatever. Write down this incident. जैसे आज लिखा उसके 2 दिन बाद वापस वही इंसिडेंट लिखो. उसके 2 दिन बाद वापस ये इंसिडेंट करो. Write it down at least for 7 times.
And the seventh time when you'll be writing it, the impact of this incident would have reduced in your mind. The trigger will be gone. But, yeah, But you have to write it. this is the first time that that trigger came in, but otherwise, kind of. आ रहा है तो resolve it ना. Yeah, वो नहीं जब कि आ ही गया है तो उसको खत्म ही कर दो. I kind of stopped So talking. it is a very, very simple tool to remove it from your mind. क्योंकि अब वक्त हो गया है कि ये मेमोरी हमेशा के लिए चली जाए. इसको ट्रिगर बना के भी नहीं रखना. हाँ, नहीं अभी जब आप पहली बार लिखोगे, दूसरी बार लिखोगे, तीसरी बार लिखोगे, चौथी और पांचवी बार तक उसका इम्पैक्ट बिल्कुल कम हो जाएगा. सेवेंथ टाइम तक उसका इम्पैक्ट ही चला जाएगा. तो नेक्स्ट टाइम अगर आप उसके बारे में बात भी करोगे ना, तो बात खत्म होने के बाद वो चीज आपके दिमाग में रहेगी नहीं. mostly is gone out of my mind because I see those people जिन्होंने जिसके थ्रू मैं गई थी. That's the reason I'm saying ना, अगर आप उनको देखोगे तो आपको वो चीज याद आ जाती है. But once you do this activity, it will be gone. Try it out. There's no harm in trying. Meet them and then talk to them and then that's it. You know, like it's okay. Normal जैसे होता है behavior, जैसे I talk to them, the way I talked to them before is the same See, thing. it is not about those people at all. It is about you. Yeah. We need to only focus on ourselves. किसने क्या किया, क्यों किया, कैसे किया, किसकी गलती थी, अब वो कुछ भी मैटर नहीं करता. I didn't have a मैटर ये करता है कि ये हमें कितना इम्पैक्ट कर रहा है. बस उतनी ही चीज मैटर करती है. that is true. And, Because sometimes people do it intentionally, sometimes unintentionally. कई बार चीजें हो जाती है, कई बार चीजें जानबूझ के करते हैं लोग. Whatever may be the reason, हमें सिर्फ ये देखना है कि हमारे पे अगर इसका असर हो रहा है तो we need to come out of it. yeah, जब exactly. तक फोकस हम अपने आप पे रखेंगे तब तक we are on the right path. जब हम फोकस दूसरों पे रखेंगे we are not on the right path. I realized Therapy quickly. counselor Quick, like I said, आपने जैसे I realized very quickly after a few times I talked that nobody understands exactly what I want. They don't want to live. They don't even want to listen to you. They don't want to listen. they don't want to listen. I know. एक ही चीज See, बात that's है. what the reaction you get from your friends and family 80% of the The time. sooner you get over it, the better it is. Better to, you know what? Let me keep my mouth shut. So I don't say anything. और अगर आप एक ही इंसान को 3 बार बताओगे ना, तीसरी बार आप जब बात चालू करने लगोगे वहीं पे वो आपको रोक देगा. अरे नहीं यार, मुझे दोबारा नहीं सुनना है, मैंने सुन लिया. That's There's true. nothing much can be done about it. I don't talk about it anymore. Actually, one of my other. So that's the see, what you are experiencing is what a normal person experiences. And that is the reason you need therapy, you need professional guidance, because those people will not tell you कि मुझे ये सुनना नहीं है. In fact, they will listen, they will understand, and they will help you come out of it. Mm-hmm. And that's what is therapy. And that's why I say therapy is healthy, because it's going to make you healthy. That is, and whoever's listening to me, I mean, we got a real case right here in front of you, everybody, because I had experienced something which I should have, like I said, I'm admitting it, that I should have gone to the therapist. But then again, once again, when you come back from a trip and you have to catch up with the house, catch up on this, so that mind में था, I should try to talk to somebody else, therapist. But then I got so busy in so many things, I got involved in so many things, kind of forgot about it. So that's how now 6-7 months तो हो गए. 7 months ago it happened. See, और कई बार क्या होता है, बहुत सालों की चीजें भी अगर आपने प्रोसेस नहीं की है तो वो भी इफेक्ट करती है. तो जरूरी नहीं थेरेपी आपको कोई रीसेंट इंसिडेंट को लेके लेनी है. It could be because of some childhood issues. It could be because of some experience that you had as a kid. It could be because of anything. आपको ये देखना है कि अगर कोई चीज आपको बार बार इम्पैक्ट कर रही है, बार बार ट्रिगर कर रही है, चाहे वो 10 साल पुरानी है, 20 साल पुरानी है या 2 महीने पुरानी है, you need to address it and you need to get that thing resolved. That is what therapy is. You're right. You're right. 100% correct. That is why you need the therapy. And then I yes, that is where you need counseling, you need guidance, you need tools to process that thing. It is just like आपका पुराना घाव, चाहे कितना भी पुराना घाव हो, आपको उसका इलाज तो करना पड़ेगा ना. also आप just because वो पुरानी बीमारी है तो आप उसको छोड़ दोगे तो वो तो और बढ़ती जाएगी. हर बीमारी को जिसका आप आज इलाज नहीं करोगे, कल और क्रॉनिक होगी, परसों और क्रॉनिक होगी, उसके बाद और क्रॉनिक होगी. और जितनी बीमारी क्रॉनिक होगी उतना ही उसको ठीक होने में भी वक्त लगेगा. तो अगर आप सोच रहे हो आपने एक थेरेपी का सेशन ले लिया और आपकी लाइफ सॉर्टेड हो जाएगी, दैट अगेन इज अ मिथ यू आर लिविंग इन. There are times you take therapy for months altogether. There are times you take therapy for years altogether to come out of that situation.
based on from how long you're holding on to it or how critical or old that wound is of yours. तो ये मत सोचिए कि 2 सेशन 3 सेशन के No. बाद ये ठीक हो जाएगा, नहीं, ये क्रोसिन या डिस्प्रिन नहीं है जो एक टैबलेट ली और आपका सर दर्द ठीक हो जाएगा। ये वो चीज है जो उस लेवल तक से इसको रिमूव कर देगी। इट विल रिमूव इट फ्रॉम योर सबकॉन्शियस माइंड इटसेल्फ, ताकि ये चीज वापस आपके लाइफ में एंटर ही नहीं हो। इस चैप्टर को कंप्लीटली बंद करना है, टेम्पररली बंद नहीं करना, Yeah, अगर like आपको हेल्दी लाइफ कोई चाहिए तो। some like incident होते हैं that people they don't do anything about it. Like I'm watching some program right now. In that program, this one guy was very badly treated by his stepfather, father or stepfather. उसको दरवाजे में used to lock him up in a room and he didn't give him any food. So now he's a grown-up man. He's getting all those things in because he didn't get therapy or anything. So he behaves कभी अपने आप को कभी कभी कुक बन जाता है, कभी he becomes a librarian, sometimes he becomes a boss. So उस टाइप की behavior करता है because that's what he saw the father doing, behaving different ways. उस टाइप की उसकी कॉपी करता है. So he's then he comes back to normal what he is. So his character has changed because he's picking up all this other behaves of a different person. Because he's getting into multiple personality disorder. Exactly. कभी Yes. कुछ कभी कुछ कभी कुछ कभी कुछ, because he is not being treated out of that trauma. Exactly. वो childhood trauma का Now he didn't get treated. आपका and to resolve these issues, it takes time. There's one more challenge which comes to people when it comes to therapy. उनको लगता है कि जल्दी से ठीक कर दो। हर चीज का जल्दी से इलाज नहीं होता वीना जी। time, I know. कुछ चीजें होती है जो जल्दी से फिक्स हो जाती है। अगर जैसे आपका 1 महीना पहले का इंसिडेंट है और छोटा इंसिडेंट है तो वो जल्दी से फिक्स हो जाएगा, लेकिन अगर 10 साल पुरानी कोई बात है उसको फिक्स कर, क्योंकि उस 10 साल पहले के इंसिडेंट के बाद उसी से रिलेटेड और भी बहुत सारे इंसिडेंट उससे जुड़ गए हैं। और भी बहुत सारी चीजें आपने उसके साथ जोड़ते गए, वो जोड़ते गए, वो जोड़ते गए, तो अब वो इशू इतना ना हो कि इतना हो गया। Correct. अगर इशू बड़ा होगा तो उसको रिजॉल्व करने के लिए वक्त लगेगा। एंड अ नॉर्मल थेरेपिस्ट विल टेल यू ऑलवेज एनी इशू mental or emotional takes 2 to 3 months to get resolved. So be mentally prepared. It is a long journey, but it is a fruitful journey. Right. इसके end results will let you live your rest of the life in peace and happiness. That's Yep. what I want to say about therapy. So Yeah. please don't hesitate when you need help and look for professional help. Our friends, our family are not equipped to give you that kind of It's true. advice, that kind of tools, and that kind of support that you need. And therapists are available everywhere now, even in India. Lots of them. हर बार आपको अपनी आइडेंटिटी बतानी नहीं होती. There are so many times you can do only a voice call with them, जहां आपको अपनी शक्ल नहीं दिखानी है, मत दिखाओ. There are so many apps through which you can book a therapist. तो आपकी आइडेंटिटी कॉन्फिडेंशियल रहती है, किसी को नहीं पता चलता. But take help. It is available and it is healthy. See, in West, people are very honest when they take therapy. Maybe in India they are not. ठीक है, आपको नहीं बताना है. We can understand in India still the culture of taking therapy and treating it as a healthy thing is not there yet. अब recently आमिर खान ने कहा अपने इंटरव्यू में, if you have read in Times of India, that he is taking therapy because he always had relationship issues with his first wife also and with his second wife also, and he admits he should have taken therapy much before, then he would have had a better life and better relationships. आमिर खान अब ने उसने भी इतना देर से realize किया, but then at least he was honest enough to talk about it. he's got But a new not everybody has to wait for so long. You know, yeah, अगर आपको लग रहा है कि कुछ सही नहीं है तो go approach and find a professional to help you. ठीक है, और ऐसा भी नहीं कि आप जो फर्स्ट थेरेपिस्ट से मिलोगे वो आपका परफेक्ट फिट होगा, नहीं, कई बार आपको चेंज करना पड़ता है. जैसे कई बार आपको दवाइयां चेंज करनी पड़ती, कई बार आपको डॉक्टर्स चेंज करने पड़ सकते हैं. हो सकता है फर्स्ट वाला थेरेपिस्ट आपका परफेक्ट फिट नहीं हो, तो इसका मतलब ये नहीं है कि सारे थेरेपिस्ट एक जैसे हैं. यू कैन ऑलवेज अप्रोच द सेकंड वन और द थर्ड वन. that is You true. will find your perfect fit.
हम कपड़े खरीदने जाते तभी भी तो पहला कपड़ा जो उठाया है वो परफेक्ट फिट हो, जरूरी थोड़ी है, हम ट्राई करते हैं ना. Change. Yes, of course. Always, always. There's no harm in trying it out. Like as चलो this topic became अभी कमलेश जी लिख रहे हैं, very very good topic, to informative topic. Yes, because like I said, this a lot of people put it under the rug, which you should not do, and don't keep it Very hanging true. around for so many years. ताकि after 10 years के बाद भी तुम्हें, when you think about the incident, is still not resolved, so it's going to come back recurringly, कोई ना कोई recur कर ही जाएगा until you really get it. रिकर कर जाएगा, प्लस उस एक इशू की वजह से you must have lost so many good relationships because I, people wouldn't have even understood why you are behaving the way you are behaving. so that is the thing. So आपके सारे रिलेशनशिप इम्पैक्ट होंगे उससे, प्रोफेशनल पर्सनल दोनों. yeah, that's true. I agree. तो अभी इसमें we'll discuss. Hello? Oh, what happened? नीलम जी? Yeah, I'm here only. 1 minute. Akash disappeared. What happened? No, And no, this is no, a I'm very here. interesting topic today. I mean, we really Yes. dealt with it because I try to talk about myself. Like I said, um, I'm glad you shared this experience, Veena, because lots I'm of people need to know. yeah. So Need to know what is trauma, and it is not easy to say and accept these things online, and you've been very brave today. I'm really impressed with you today. thank you so much. I wanted to share that because we were talking about it and it just came to my mind that that time I should have also sought help. But before we were talking, मुझे ख्याल ही नहीं इस चीज़ का आया. Then all of a sudden I said I should have. Then I started talking about what happened. Then I told her. So I just explained everything in front of everybody who was watching. If you didn't hear it before, then please go back and listen to the recording, and you will find all the whole topic there. And Neelam ji will come back again. Maybe we can, if there's anything more to discuss about this, we can go next step. We can go a little further and talk more about this thing because I think it's a Yeah, we can do that. very important topic. And it's very, like you said, therapy is healthy. You know, Yes, therapy is healthy, very healthy. talk it out of your system is even more healthy. Like the healthiest thing to do to get over it. Yes, It's like eating healthy food. खाना भी तो खाते हो healthy, तो ये भी healthy होना चाहिए ना. बिल्कुल. So same. अगर आपकी फिजिकल हेल्थ आपके लिए इम्पोर्टेंट है तो आपकी मेंटल और इमोशनल हेल्थ भी आपके लिए इम्पोर्टेंट होनी चाहिए. Yes, exactly. I agree. So thank you so much. And this Friday we're having Narinder ji. Please don't forget to join. Same time and same place, of course. And please forward um, this topic. I mean this whatever you call it. Session. Session. Sorry. Yeah, please forward the session to everybody you know so that they can get Yes. because it's a very important topic. Thank you so Yes, much. I would also say please forward it because lots of people are still not understanding the difference between a therapist and a psychiatrist. People don't know for what all issues they can take therapy. So I have mentioned all that in this session. Please go ahead and share it with as many people as you want, with your friends and your family. And if you want to get in touch with me, my Instagram and Facebook handle is naturesgrace.reiki. Plus, you can directly contact Veena ji also. I will also put my contact details in the comment section of this live session. And thank you so much, Veena ji, for inviting me. You're And welcome. it is always a pleasure to discuss different topics with you. Thank you. Thank you so much for joining. Like once again, all of you. And Neelam ji, आपको मैं call करूँगी आपको to Sure. discuss. And then and bye everybody. We'll see you soon. Bye. Take care. Thank you. Have a nice day, everyone. Thank you. Bye. Yeah. Bye. Okay, let's do this.